right? Doing Z and pressure, volume, Z, etc. curves for a real gas now. For a real gas, this Z compressibility is PV by RT. Okay. And for any value of P, the Z value for an ideal gas is 1. Okay. So it is 1 always. Now think of a real gas. Real gas mein aise gas molecules hain. The difference was between a real gas and ideal gas. Pehle tha, they don't. So real gas will behave like an ideal gas at what values? Low pressure. Low pressure and high temperature. Low pressure and high temperature, right? Is x axis mein low pressure kahan par hai? And the left hand low pressure है और right hand high pressure है. ठीक है. क्या होता है gases का कि gases का जो Z value है वो higher pressure पे more than 1 होता है real gas का. क्या होता है? Higher pressure पे more than 1 होता है. और जैसे जैसे pressure कम करते हो it closer and closer to 1. ठीक है. तो अलग अलग गैस का अलग अलग होता है कर्व. ठीक है. एक कर्व देखेंगे कैसा होता है. ऐसे है गैस का. ठीक है. दिस इज गैस. ओके. इधर जल्दी करो जल्दी. ठीक है. दिस इज वन कर्व. ठीक है. एक मिनट पहले ये नहीं बनाना, पहले ये बनाना. देखो ऐसे होता है. ये रियल गैस का कर्व है. रियल गैस का ऐसे बनाना. ठीक है. ये बनाना. ठीक. ऐसे है तो कैसे हो रहा है कि प्रेशर कम कर रहे हो तो ऐसे जा रहे हो. ठीक है. ऐसे जा रहे हो एंड देन यू आर रीचिंग 1. ओके. एट वेरी लो प्रेशर. ठीक है. अब ये बताओ अगर टेम्परेचर हायर होगा, इफ यू हैव अ हायर टेम्परेचर, इफ यू ऑपरेट द सेम कर्व एट हायर टेम्परेचर, more closer to the black line, right? Very good. If you operate this curve as a higher temperature, your curve should be more closer to the black line, to the ideal gas line, right? And therefore you will start from the same point, but then you will end up being closer always to the black line. Okay, understood? And you will write T2, you will write T1, and then you will write T2 is more than T1. Okay, understood? Yeah. This is Z versus P curve for a real gas. ठीक है. Now let's come to PV curve. PV curve क्या होता है? ये देखो PV. PV. In for an ideal gas, it is a exactly like a so rectangular hyperbola. ठीक है. PV is constant for ideal gas. For a real gas, इसको देखो रियल गैस के लिए ना ये कर्व थोड़ा सा ऐसा होता है. एक मिनट. Solid lines for experimental and okay. See. I'm going to make it again. Okay. So I'm making black ideal बना रहा हूँ. ठीक है. And colorful I'm making for real. Okay. So solid and Boyle's law is dotted. Okay. If this is a rectangular hyperbola, okay, you tell me for a real, so ideal gas at so for some volume of gas, some pressure is there, right? For a real gas, the pressure, what is the assumption कि collide नहीं होता है ideal gas के लिए, लेकिन actually क्या होता है? Collide होता है. तो real का pressure क्या होगा? Decrease. थोड़ा सा कम होगा ना. इसका मतलब for the same volume, lesser pressure, right? तो यहाँ से जाएगा ना कर्व. ये समझ में आया ना? नीचे से जाएगा. प्रेशर की वैल्यू नीचे से जाएगी. मतलब कर्व थोड़ा सा ऐसा होता है. ये ऐसा होता है. ठीक है. ठीक है. ऐसे हल्का सा ऐसा होगा. ठीक है. समझ में आ गया. इसमें रेड वाला क्या है? यस. ब्लैक वाला आइडियल. ठीक है. यू हैव अंडरस्टूड श्रेया एंड आर्या? Yes, sir. Watson? Okay.
Now, if you draw this graph for TV curve, TV, okay. Now TV curve is for an ideal gas, T is proportional to V. You know, if you have a constant pressure, the volume should be proportional to temperature. So you should have a, for ideal gas, the line should be like this, okay? Straight line, okay? For a real gas, at the same volume, one second. ऐसा है, इसको देखते हैं कैसे ऐसे क्यों है, ये है at lower, yeah, see, when will real gas behave like an ideal gas at high temperature? So can you see that this curve is approaching the ideal gas line, right? And it is away from the ideal gas at lower temperatures. These are the, in the y-axis, the lower y-axis, closer to the origin is lower temperatures, okay? Explanation for real gas TV. मैंने अभी ये बोला है कि ब्लैक लाइन इज द आइडियल लाइन, और जो रियल गैस बिहेव लाइक आइडियल गैस एट हायर टेम्परेचर. इस ग्राफ में हायर टेम्परेचर ऊपर है ना, यहाँ पर है ये, तो इसीलिए ये ब्लैक रेड लाइन ब्लैक लाइन की तरफ जा रही है. अभी तक ये नहीं बताया कि ये ऊपर क्यों है, इसकी लाइन के नीचे क्यों नहीं है. क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए रियल गैस का, फॉर द सेम वॉल्यूम ऑफ गैस, the temperature of real gas is more than temperature of ideal gas. 1 minute. In looking at this, the same temperature volume is lesser. Yeah, I think that's a correct. That's a- For the same temperature, the volume of real is lesser than volume of volume of ideal. is less. Yeah, it's correct. For the same temperature, the volume available to real gas is lesser than volume available to ideal gas. So now this way you can remember, okay? Understood? ये हो गए तीनों कर्व, ये असाइनमेंट में ही तीनों करने हैं, ठीक है, तीनों ये हो गया. अभी there is an important, Even if the volume is greater or lesser, you can put the graph down, right? pardon, Like the volume, like it remains at like a lower volume, so it can be below, right? Can also be below, I mean. 1 second, are you saying it should be, it can also be like this? Yeah, Oh no, it can't like be. starting from the same point on the x-axis. Starting in the same point in the x-axis. So are you saying, 1 second, are you saying I have to make a vertical line like this? No, Can you annotate on the screen? no, like, okay, wait. Like, basically the red line that is there, right? Pardon? The red line that is there, Uh-huh. you can just bring it down, the whole thing. So are you saying, okay, this is the red line, right? Yeah, Are you saying like this? yeah. No. See, she's, 1 minute, I'll make another curve, okay? You tell me whether you want to say like that or not. You want to say like that, okay? Or you want to say like that. The green one. The green one, नहीं. The green one में क्या है कि green one में एक problem है. Green one में problem ये है, जिसने बोला ना, क्या बोला उसने कि एक सेम टेम्परेचर पे दो गैस पकड़ोगे, एक रियल और एक आइडियल, इसका वॉल्यूम ऑक्युपाइड कम होना चाहिए. Yeah, रियल गैस कम होना चाहिए ना. yeah. तो तुम सेम टेम्परेचर पे ऐसे ऐसे एक लाइन बनाओ, सेम टेम्परेचर पे लाइन बनाओ. अगर तुम बोलते हो कि ग्रीन इज द कर्व फॉर रियल गैस, यू कैन सी दैट एट द सेम टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द आइडियल गैस इज दिस मच एंड द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द real gas is this much. If you say the green is the curve, or for that matter yellow is also the curve. Oh, so it should be Above greater. the line, yes, it should be Okay. above the line only, and it should approach the black line at higher temperature. These two logics say the blue line you'll get. Okay. Okay. Good. Okay, now next thing is, so see, when you take a this map, you take a gas container P, V and T. Okay, how do you measure volume?
Volume is like you can measure it using container, right? Yeah. Yes, volume of the container. Dimensions of the container. Correct. Temperature कैसे नापते हैं? Thermometer. Pressure कैसे नापते हैं? कोई तो barometer something, okay? इसमें क्या किसी में भी किसी भी चीज को you want to measure, do you want to go and see a microscope No. and find the Exact thing. no molecule? You You don't need information of the molecule, right? You can. not possible. It's not possible. It's very. इसको बोलते हैं microscopic quantities, microscopic variables या microscopic Very quantities. Cellular microscope. Same thing. Macro, MAC. You don't need a microscope, so it is not microscopic. Yeah, quantities, macroscopic quantities or variables. ठीक है? Yeah. ठीक है? Now, if you go to a molecule, suppose there is a molecule of mass m and it's going with some speed v, then the momentum of that molecule, okay? Momentum oblique speed of that molecule. If you get momentum, you have speed, you can also find kinetic energy of the molecule, okay? So kinetic energy will on in this chapter, we will also write E as E, we will not write KE every time, okay? These are what quantities? Microscopic, okay? Microscopic variables. Now, if you have done a chemistry में chapter है, उस chapter का नाम है gaseous state of matter या gas laws. उसमें तुम हमेशा मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी के साथ ही खेलते हो, ठीक है? इस चैप्टर में कैसे क्या वी विल रिलेट दीज टू डोमेन्स. ये दोनों पीवीटी को किसे रिलेट करना है? इसके एनर्जी से. हाँ, मोमेंटम को पी बोलते हैं, स्पीड को वी और के को ई, ठीक है? ये दोनों डोमेन्स को रिलेट करना ही ये चैप्टर है, ठीक है? अभी वही पढ़ेंगे, ठीक है? कैसे रिलेट करते हैं, ओके? अब जल्दी सुनो, ठीक है? इंपॉर्टेंट, एकदम इजी डेरिवेशन है, ठीक है? एक कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स है, उस कंटेनर का उसमें कंटेनर के एक वन पार्ट को मैं स्टडी कर रहा हूँ. एक वन पार्ट ऑफ दैट कंटेनर आई एम स्टडीइंग. दैट पार्ट इज अ क्यूबिकल बॉक्स. दैट पार्ट इज अ क्यूबिकल बॉक्स, ओके? Of side 111, you can also write LLL, it doesn't matter, okay? If the dimensions of the wall of the cube does not matter, we'll see later why, okay? And once again, ठीक है? Now, सबसे पहला होता है कि गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स है ना, they move randomly in all directions. They move randomly, okay, in all directions. That means there is no preferred direction of motion. ऐसा नहीं है कि some want to go in X, some want to go in Y, some want to go in Z. And right, this happens in spite of gravity. This happens in spite of, अगर gravity है तब भी, ठीक है? Okay? क्या? हाँ, yes. अच्छा, ऐसा हो सकता था ना कि गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो ग्रेविटी से इफेक्ट होते तो क्या होता? Then they would all move uniform. Nah. What will happen? The same, just go randomly, just go in spite of. In spite of gravity, but somehow I'm asking if they were affected by gravity, what would happen? They'll all be lower. They'll all be सारे लोग नीचे बैठ जाएंगे. Yes, they will all sit lower. That means they will not move. That means gas will not exist. वो liquid बन जाएगा. It'll get compressed. It'll get compressed, right? That's what happens in very high density planets. The gas molecules, there is so much gravity that gas molecules can't exist as gas molecules. They liquidify. Understood? So, ये जो अपने अर्थ पे ग्रेविटी बहुत कम है, तो इस वजह से गैस मॉलिक्यूल्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता. वो गैस रहते हैं, मस्त, उनको फर्क नहीं पड़ता ग्रेविटी है, ठीक है? ठीक है? स्टार्स, ओके? ठीक. तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, मान लो मास m का, यहीं कहीं पे है, ठीक है? अंदर बीच में है, ठीक? उसका जो ये बताओ, अच्छा ये बताओ कि इफ यू टेक दिस, सोचना थोड़ा सा, ठीक है? थोड़ा सा इमेजिन करना. इफ यू टेक अ एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है? ए, ऐसे एक नेट ले लिया, ठीक है? एक मेश
एक नेट और मैश ले लिया, ठीक है। अब ये बताओ, if the gas molecules are moving randomly, ठीक है, in which plane is this mesh kept right now? X. No. YZ plane, Oh no? yeah, why is it? ठीक है, YZ plane. YZ plane में you count, you wait for some time and then you count how many number of molecules are crossing this, है ना? It will be same whether if you put this mesh in the XY plane, that count will be same, right? Yeah. Or in ZX plane, ये सब same होगा ना? Understood? Now, because gas molecules are random, you will also agree to one thing. There are two sides to this mesh. There is a left side and there is a right side, right? I have not said that I have put this mesh exactly in the middle. Anywhere I put. ठीक? The number, पीछे वो mass m का एक बस एक molecule था, ठीक है? So छोड़ो अभी. The number of molecules crossing from left to right should be same as the number of molecules crossing from right to left. Why? Because they're not freely, like they're moving freely. So There's no force applied Yeah. on them to, move in one particular direction. Okay. So net force is increasing. क्या नहीं है? M1 क्या बीच में नहीं है? Mesh. mesh बीच में नहीं है, जरूरी नहीं है. अच्छा नहीं बोल सकते. अच्छा Sure, but अच्छा ठीक है, नहीं बोल सकते ना. मतलब तुम ये बोल रही हो कि यू आर सेइंग कि इक्वल नहीं है. लेट्स से इक्वल नहीं है, ठीक है, लेट्स से इक्वल नहीं है और ये बीच में नहीं है mesh, ठीक है. लेट्स से इक्वल नहीं है तो कोई एक डायरेक्शन से ज्यादा है. अगर इक्वल नहीं है तो तुमको ये मानना पड़ेगा ना कि आइदर लेफ्ट टू राइट मोशन ज्यादा है और राइट टू लेफ्ट मोशन ज्यादा है. ये मानना पड़ेगा. कौन सा मानना है तुमको, बोलो. ठीक है, तो तुम बोल रहे हो लेफ्ट टू राइट मोशन ज्यादा हो रहा है, राइट, और राइट टू लेफ्ट मोशन कम हो रहा है. अगर ऐसा हो रहा है और मैं थोड़ी देर वेट करूं तो क्या होगा? थोड़ी देर बाद all molecules will move from left to right. मतलब net motion of molecules will be all नहीं, let 100 cross from left to right, then only 80 will cross from right to left. इसका मतलब क्या है? थोड़ी देर बाद राइट में डेंसिटी बढ़ जाएगी, इंक्रीजिंग, राइट. पर ऐसा तो नहीं होता टाइम के साथ. Because higher density, lower density. ऐसा तो नहीं होता ना कि एक मिनट रुको. ऐसा तो नहीं होता ना कि एक गैस मॉलिक्यूल का सर एक गैस कंटेनर को रख दिया अपने आप और थोड़ी देर बाद देखोगे कि राइट साइड में अपने आप गैस ज्यादा बढ़ गई और लेफ्ट साइड में डेंसिटी कम हो गई. ऐसा तो नहीं होता ना, ये नहीं होता ना. Unless an external reason. Sir, but let's say message towards the left side. ठीक है, okay, I get where you are getting at. Suppose here this is the front face of the cube, okay, and I put the mesh here, okay. Yeah. Now see these two statements are different. The average number of molecules on the left side of the mesh is more than the average number of molecules on the right side of the mesh. That is correct, of course, right? Yeah. And that is proportional to volume, right? But the number of molecules crossing from left to right is same as the number of molecules crossing from right to left. Is the density on the right? Good density. Of course, the same mesh. Mesh, matlab it is just Yeah, concerning I- imaginary area. It is imaginary area. So density of Left, yes. The volume volume of number of molecules to the right side will be less than number of molecules on the left. yes. So since the volume differs, shouldn't the number of particles also? Yes, they are number of So, particles is but- different. But I am agreeing to the fact that the number of Oh. particles on the left but that is more than the number of particles on the right. That is true. volume, but moving. Moving is same. No? The number of molecules which cross from right to left should be equal to the number of molecules which cross from right to left. Understood? If this does not happen, gradually the gas will become non-uniform density, right? Understood? ये भी समझ में आ गया? पक्का ना? ठीक है. अब एक बात बताओ कि एक चीज, एक क्वेश्चन है, उस काइनेटिक थ्योरी गैस के असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 40, 39, 40 and 41. Shreya, you read all three of them and answer them one by one, okay? 39, 40 and 41. You hear them, okay? Shreya, please, fast.
Shreya? What is girl doing? Yes, sir. Read 39, 14, 41 and answer them. Okay. A ball of mass 2 kg is going with 5 meter per second towards positive x-axis. Find its momentum. Hmm. A ball of mass 2 kg is But going then with. you answer that. Answer that. Okay. All at once. 5 kg. 2 kg. Where, 10 boards. Not right now. Sujoy, answer this. So 1 second, I'm trying to find the question. So fingertip side. The backside one. Oh, Arya, So it'll be 10. what 10 what? So kg meter per second. 10 kg meter per second I cap. Yeah. Read the next question. And a ball of mass 2 kg going with 5 meter per second towards negative x-axis. Find its momentum. It'll be like the same thing but minus I cap. Yeah. So minus 10 I cap. Now read the next question. A ball of mass 2 kg is going with 5 meter per second towards positive x-axis. It gets reflected from a wall and now goes towards negative x-axis. Hmm. Find its momentum change. कितना होगा आंसर? So will it return to the original position? It does not matter whether it returns to the original position or not. Momentum is just mass into velocity. There is no position, no? Sir, so it will be in rest only, no, sir? No, it will not be in rest. Huh? If that after reflection it is going with 5 meter per second. Yeah, so it will come back in the wherever it started, no? How do you know where it started? Oh, yeah. It does not matter with the position. It only matters on the speed. What Okay. is the initial momentum? Initial is 10 I cap. Then I get what is final momentum? So wait. Yeah, minus 10 I cap. What is change in momentum? 0. Minus 20. Minus 20. Okay. Sorry. Wait. Okay, yeah, sorry, yeah, minus 20. So this is change in momentum. The if you write magnitude of change in momentum, it is called 2 times the initial momentum. Okay. If it is Yeah. full reflection. Now read the next part of the question. How much impulse did the wall provide? Impulse, देखो impulse is change in momentum. लिखो जल्दी. Impulse is equal to change in momentum. Impulse has the same direction as momentum. Yes. Change in momentum. Impulse is the same direction as change in momentum. Change. Change is final direction. Oh yeah. ठीक है? तो impulse भी उतना ही आएगा. और what is और फिर next part. If this reversal of direction happened in 0.1 second, how much average force will the wall be made? F का फॉर्मूला होता है डेल्टा P by डेल्टा T. कितना है डेल्टा P? 20 और minus 20. ठीक है? और डेल्टा T कितना है? 0.1. So इसका आंसर कितना होगा? 200 क्या यूनिट? न्यूटन. ठीक है? And the force is on the left side. Wall hits comes back. So what is the force? Then it should be minus 100. Minus 1 left side. It is minus 1 Okay. or left side. Force is towards the left side. Okay. ठीक है?
So now if you consider a gas molecule, ठीक है, उसका mass m है, उसका velocity v है, ठीक है, एक मिनट, हाँ ये, हाँ, देखो सबसे पहले उसका एवरेज x में वेलोसिटी, देखो सब गैस मॉलिक्यूल्स का स्पीड एक टाइम पे सेम नहीं होता, ठीक है, Wait, all molecules do not have the same internal speed. नहीं सबका एक टाइम पे सेम नहीं होता। जैसे क्लास में बच्चे दौड़ रहे हैं इधर उधर, हाँ, तो कोई किसी टाइम पे 2 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा होगा, कोई 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा होगा। But the net will be same. नेटवर्क भी सेम का मतलब क्या होता है? मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ, वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने स्पीड बोल रहा हूँ, ठीक है। speed changes for everything with the Yes. same amount? No, not the same, not necessarily with the same amount, but everyone's increases. Okay, ठीक है। So I am talking about speed, okay, right now. So देखो ऐसा है कि किसी एक मॉलिक्यूल का जर्नल Vx है, कुछ Vy है और कुछ तो Vz है, ठीक है, ठीक है। तो नुबंध रख, ठीक है, Vx Vy Vz है, 3 कंपोनेंट में उसका स्पीड तोड़ दिया, जैसा भी स्पीड था, ठीक है, कैसी भी डायरेक्शन में कैसा भी था, v था उसको 3 में तोड़ दिया, Vx Vy Vz ब्रेक कर दिया। अब if you see this cube, if you consider a time parallel plane area a, अच्छा, इस क्यूब का जो डायमेंशन है वो l स्क्वायर है, ठीक है, मतलब इस क्यूब का l है, तो ये एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया l स्क्वायर, ठीक है। ये जो येलो वाला पार्ट है, इसे इमेजिनरी जो सरफेस है, उस सरफेस से if you wait for time delta t, how many molecules will cross this, and like this from left to right, how many molecules will cross? Okay, we have to find out. See, any molecule which is in this region of space, okay, and the width of this region is Vx into delta t, will cross from left to right. It is same as in current, no, NEAVD. देखो सुनो ध्यान से, इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर मॉलिक्यूल का स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और तुम 1 सेकंड रुकते हो, तो देखो इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जिनका 5 मीटर पर सेकेंड है, तो सोचो कि, और यहाँ पे तुम्हारा मैश है, ठीक है, यहाँ पे मॉलिक्यूल है जिसका 5 मीटर पर सेकेंड है, तो 1 सेकंड में 5 मीटर वाला जितने भी, 1 सेकंड में जितने भी इस 5 मीटर में जो वॉल्यूम में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स है इस 5 मीटर सेकंड में, वो सारे यहाँ से यहाँ क्रॉस हो जाएंगे ना, है ना। अच्छा, उतने क्रॉस होंगे कि उसके एवरेज आधे क्रॉस होंगे? more than half. अभी देखो, No. देखो listen, already I have said, I have broken the 3 component velocity, total velocity into 3 components, Vx, Vy and Vz, okay. Now the only component which is responsible for crossing this is the x component. Vy and Vz do not get involved in crossing this. Understood? Right? First logic हो गया. Second logic, if you are seeing a mesh, ये वाला है, if ये mesh है जो, ठीक है, मैं थोड़ा अलग कलर से येलो से mesh बनाया था ना, ये mesh है, ठीक है, ये mesh क्यूब में कहीं तो है, ये बड़ा सा क्यूब था, ये ऐसे बड़ा सा क्यूब था, है ना, इसमें यहाँ पे mesh है, ये mesh में इस रीजन के जिसका कि जो डायमेंशन है वो Vx delta t है, if you wait for a time delta t, how all the molecules cross the left to right? See, in this total region there are some molecules, right? Yeah. Can you, by symmetry, half of them are going to the right and half of them are going to the left? Yeah. Right. Yes or no? Yeah. So half of them are crossing this mesh. Okay, but on the right side there is another. Yes, very good question. On the right side there are, and in this volume there are some molecules which are going, half of these molecules are going from left to right and half of them are going right from left and half of them are going right, but I'm not interested in them. I'm just asking how many molecules are hitting this mesh at some time from left to right. Half of the
half of this volume, right? Yeah. ठीक. Why half them? Half them will go to the right, half them will go to the left in this area. In this region, So, right? So in this mesh, how many are colliding? Let's see, half of those molecules. Half of Now, them. how many molecules are there? देखो. Suppose, अच्छा इसका जो dimension है, ये जो cuboid है, इसका dimension, black cuboid का dimension कितना है? इसका ये width है Vx delta t और इसका area L square. समझ में आ रहा है ना? L square को A बोल दिया है, कैपिटल है, ठीक है? तुम्हारी बुक में L square is equal to A. तो कितने वॉल्यूम कितनी है उसकी, उस रीजन की? L square और सॉरी A, राइट? कैपिटल A और Vx डेल्टा t, ये वॉल्यूम है उस रीजन की. ठीक. उसके बाद n, if n is the number of molecules per unit volume, n is number of molecules basically density. per unit volume, ठीक है? Density. डेंसिटी नहीं है, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, ये Oh, नंबर डेंसिटी है. number. तो इसको अगर n into a Vx डेल्टा t, ये क्या है बताओ? ये क्या है? Total number of Molecules in that, right? Total number of molecules, total molecules in that volume, right? ठीक है? कितने molecules क्रॉस कर रहे हैं? Half of this. So molecules crossing, number of molecules crossing is equal to half of. What is this volume is equal to Vx? That's the Oh, thickness. yeah. ठीक है? The ये volume समझ of the एक मिनट, ये क्या, ये वॉल्यूम इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉस कर रहे हैं उसको, ठीक है? अब अगर ये एक वॉल होता, ठीक है? अच्छा, एक मॉलिक्यूल जब आता है, एक मॉलिक्यूल m जो है वो vx स्पीड से आता है, ठीक है? तो वॉल, अगर ये वॉल होती, अगर ये मेश गैस की वॉल होती, वहां पे एक इमेजिनरी तुमने हाथ रखा होता, ठीक है? तो हाँ, these molecules will hit your wall, right? And they will get reflected back, right? So what is change in momentum? minus 2p, 2 mvx, right? 2 times mvx will change momentum. So change of momentum associated with one molecule is 2 mvx, right? So delta p of one molecule is equal to 2 mvx. What is the delta p of these number of molecules? Delta p mesh is wall. I mean mesh. You can keep the mesh anywhere. I said you can keep it anywhere, right? It is an infinite gas chamber. Okay. I'm keep taking. Ek mesh is a very. How are we telling like because it's random, we are assuming come back also. Yeah. Okay. Delta p net is 2 mvx into half n a vx delta t. इसमें से half 2 जाएगा. You will get. हाँ. So delta p हो गया ना ये क्या है? मोमेंटम चेंज है, राइट? ये मोमेंटम चेंज है, तो फोर्स कितना होगा एवरेज? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी चला गया, कट गया डेल्टा टी, तो फोर्स एवरेज ये देगा एम वी एक्स स्क्वायर एन ए, यही है? तो थोड़ा सा लिखना एन एम वी एक्स स्क्वायर, ठीक है? और ये समझ में आ गया? हेलो, समझ में आ गया ना? ठीक. अच्छा, और प्रेशर कितना होगा? प्रेशर इज फोर्स एवरेज बाय एरिया ना, तो प्रेशर में आ गया एन एम वी एक्स स्क्वायर. इसका मतलब प्रेशर में दो चीज नहीं है, एक तो टाइम भी नहीं आया और क्या नहीं आया? एरिया भी नहीं आया. इट डजंट मैटर व्हाट एरिया यू आर टेकिंग, ठीक है, राइट? और इट डजंट मैटर फॉर व्हाट टाइम यू आर कंसीडरिंग, प्रेशर रिमेन सेम, ठीक है? अंडरस्टूड? So the value of n will be given, right? N is number of, yeah, N is actually, we'll see N is number of molecules per unit volume, right? Yeah. You will find it out using macroscopic variables. You can find it out, okay? So M1 V1 is equal to M2 V2. That is sign convention. The momentum collision. This is a case of collision between two. So in that case, फिर से बोलो ये क्या है? like after they say the momentum before and after collision is conserved. Momentum is conserved. तो तुम गलत बोल रहे हो. M1 U1 is M1 V1 ना? इसमें तो एक ही ऑब्जेक्ट है. Collision हो रहा है क्या? Collision हो रहा है क्या? ऐसे नहीं, मोमेंटम ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज कंजर्व्ड.
everything which is colliding, net momentum is conserved. No, but even if you like M1 U1 plus M2 U2. Then you're talking of two bodies. Two bodies. You should talk of two bodies, right? Yeah. And in this, why do we just assume that it's coming out of the same velocity? Elastic collision. Molecules are not losing energy when they're hitting the wall. Assumption of ideal gas. Okay. ठीक, गुड क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताओ, क्या Vx क्या x डायरेक्शन स्पेशल है क्या? जो Vx का यूनिट होना चाहिए, क्या डायमेंशन होना चाहिए, वही Vy भी होना चाहिए। जो Vx का जो एवरेज यूनिट है या एवरेज है, वही Vy का भी एवरेज होना चाहिए और वही Vz का भी होना चाहिए ना। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा एक बात बताना, जब अगर एक जैसे दो डायमेंशन में अगर एक टू डायमेंशन है, ठीक है, एक्स और वाई, और एक कोई वेक्टर है v, वेक्टर है कोई v, वेक्टर v को तुम तोड़ते हो x और y में, तो ये हो जाता है vx और ये हो जाता है vy, फिर बोलते हो vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर, ठीक है। अगर तीन डायमेंशन में तोड़ोगे तो लिखोगे v स्क्वायर इज इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। समझ में आया? दूसरी बात ये बताइए कि vx vy और vz तीनों बराबर है ना, तो ये तीनों को बराबर है, तीनों को मैं vx लिख सकता हूँ, तीनों को vx लिख दूंगा तो जो नेट वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 3 टाइम्स vx स्क्वायर। तो जो vx स्क्वायर है उसकी जगह क्या डाल सकते हो, नेट वेलोसिटी बाय 3, तो यानी प्रेशर को क्या लिख सकते हैं, nm v स्क्वायर बाय 3। समझ में आया कि नहीं? हेलो, अंडरस्टूड? V square to Vx square plus Vy square plus Vz. बताओ उसको। You are the vector, no? Like दिस इज v नेट वेलोसिटी, ओके। if there is a blue vector of v, it will result into v cos theta and vx and vy, right? And imagine this vy and resultant vector is what? Square root of vx square plus vy square. It's in 2D. In 3D, v square is equal to vx square plus vy square plus vz square. You can also split this as vx, first calculating vx and vy. You get v net for vx and vy, v square root of. And then that component plus Z. ठीक, समझ में आ गया? अब जो तुमने रिया ने पूछे थे कि सारे मॉलिक्यूल्स का स्पीड तो सेम नहीं होता ना, तो एक डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड होती है, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसा होता है, वो तुम्हारे बुक में एक ब्लू कलर के मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, उसमें दिया हुआ है, ठीक है। मैक्सवेल एक ब्लू कलर का बक्सा है, उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो वो कैसा दिखता है, वो ऐसा दिखता है कि एक्चुअली ऐसा होता है कि तुम अगर देखोगे तो द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसे वाई एक्सिस पे, और ये स्पीड है, ठीक है। तो इसमें ऐसा होता है कि ये ऐसा होता है कि मतलब मोस्ट मॉलिक्यूल्स की स्पीड कुछ बीच में होती है, ठीक है। लेट्स से 5 मीटर पर सेकंड होगी, ठीक है, और कुछ की 6 भी होगी, उससे कम की 7 होगी, उससे कम की 8 होगी। समझ में आया? किसी की 4 होगी, किसी की 3 होगी। नहीं, जीरो नहीं है, जीरो नहीं है। Right, okay. स्पीड में दिस इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके। सो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब होता है, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, कि मोस्ट मॉलिक्यूल्स विल हैव अ मिडिल स्पीड, एंड apart from that, the farther you in speed you are going, the lesser and lesser number of molecules have that speed, okay. So if you know that you found out some average speed, let's say 5 meter per second in some gas container, and ask you, is there a molecule with 8 meter per second? Yes, it will be very less, okay. So are there some molecules with 8 meter per second? Yes. Are there molecules with 9 meter per second? Yes. The number of molecules with 9 meter per second is of course lesser than the number of molecules with 8 meter per second, okay. Now if you increase this temperature of the system, what is going to happen? Whatever had 5 will become 5.5, जिसका 6 था उसका 6.6. It does, I'm not saying किसका ज्यादा increase होता है, किसका, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। Only logic is this curve shifts to the right and it becomes lower. So write this, okay. At higher temperature this curve shifts right and should become lower because the total number of molecules should remain same. Fraction था, area will be same. Very good. You remember things, okay. ठीक है, जल्दी करो, जल्दी करो। तुमने ग्राफ बनाया?
ग्राफ बना है? Okay. At higher temperature, this curve shifts right and to lower. Okay, the peak becomes lower. Okay, done. Okay, now see, there is something called RMS velocity. 12th graders already know it. So right, if RMS का मतलब होता है root of mean of square, root of mean of square. So you have to find right question, right? Find RMS of 1, 2, 3, 4, 5. So RMS का मतलब है root of mean of square. So first you square them. First you square them. 1 square, 2 square, 3 square, 4 square, 5 square. So you square them, okay? Squared. And then you find mean. What is mean of these numbers? It is 1 plus 4 plus 9 plus 16 plus 25 divided by 5. Okay? And if you find that out, you will get 16 plus 9 is 25, 50, 50 plus 4, 54, 55, 11. Okay? Root. And then you take a root of that. Root of 11 is equal to root 11 is equal to 3.9. 3.3. Yeah, something like 3.3. Let's say 3.3. Okay, whatever is. So this is the RMS of these 5 numbers. Okay, understood? What is this for? This is for all the molecules will not have this speed, but what speed do we take here? We take this RMS. Okay. Okay. What is the 5 meters square called? That is called the most probable velocity. That is not RMS. Okay. So you will write that the E. So 1 second. Okay. So pressure was कितना pressure था 1/3 of N and N था क्या था इसमें N M. What was M? M is mass Of each molecule. each molecule. N is number density. number density. और ये आ गया तुम्हारा V RMS का square. Okay. ये प्रेशर है, ठीक है। अच्छा, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? पीवी इक्वल टू एनआरटी, एनआरटी ना, ठीक है। अब सुनो, अच्छा इसमें ये एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। कैपिटल एन नहीं, स्मॉल एन ही बोलते हैं। कैपिटल तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। ये प्रेशर को क्या डालेंगे अब यहाँ पे? 1/3 N M V RMS स्क्वायर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, ये नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, इंटू RT, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? I will not get confused. In that, you will not SSB will get confused. You will get confused. Number density. वो सही बोल रही है, नंबर डेंसिटी, ठीक है, ठीक। ये क्या लिखा है? 2/3 हाँ, ठीक है। अच्छा अब ये देखो, इसमें अगर इसको 1/3 को 1/3 में ना एक ऐसे 2 मल्टीप्लाई करूं, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दूं और एक 2 यहाँ रख दूं, ठीक है, तो हाफ मास V RMS स्क्वायर, ये क्या है? हाफ चीज का के ये of each molecule. ऑफ ईच मॉलिक्यूल है ना, है ना, P ऑफ ईच मॉलिक्यूल है ना। अच्छा अच्छा, एक बात बताना, जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा कैपिटल N, क्या वो ये होगा नंबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यही होगा ना? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये क्या होगा? नंबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी ऑफ पर वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम,
तो ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है, इन दोनों चीजों का मल्टीप्लिकेशन? Oh, total. No, wait, no. Can be capital R. कैपिटल एन है ना? Yeah. तो क्या इसको लिख सकता हूँ 2/3 कैपिटल एन के ई इज एन आर टी, राइट? अच्छा, और ये था के ई ऑफ ईच मॉलिक्यूल. दिस थिंग इन येलो was ke of each molecule. Yeah. If you multiply that with n, what will you get The total kinetic energy. of the gas system, right? So the thing in green is, right, total ke of System. gas system, right? Gas system का मतलब है all the gas molecules combined, right? And ये था ke of each molecule, right? Okay. Now, तो इसको क्या बोलेंगे? ये टोटल एनर्जी है. इसको मैंने क्या बोला था आज, क्या बोलेंगे? ई बोलेंगे ना बस. ठीक है, आज बोला था ना, कहीं तो बोला था, पता नहीं. K of system 3/2 nRT. के ऑफ सिस्टम होगा 3/2. यस, वेरी गुड. तो के ऑफ पूरा सिस्टम कितना होगा? 3/2 NRT. यस, 3/2 nRT. ओके, के ऑफ द फुल सिस्टम. समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? नहीं. दूसरी चीज ये भी होती है कि जो पीवी पूरा था ना, जो लेफ्ट साइड, सिर्फ लेफ्ट साइड देखो तो लेफ्ट साइड पीवी से स्टार्ट किया था ना, तो लेफ्ट साइड कितना बन गया? पीवी इज 2/3 ई बन गया ना. मतलब ये देखो लेफ्ट साइड में क्या है? प्रेशर है. प्रेशर मैक्रोस्कोपिक. वी क्या है? Volume. वॉल्यूम मैक्रोस्कोपिक. और राइट साइड में 2/3 इज एनर्जी. एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स. दिस इज माइक्रोस्कोपिक. ठीक, समझ में आ गया? हाँ, ठीक. और केई, टोटल केई कितनी हो गई? 3/2 एनआरटी. ठीक. अब एक चीज और देखो, चैप्टर के शुरू में बताया था कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, वो कितना होता है? आर बाय एवोगैड्रो. आर बाय एवोगैड्रो होता है ना. 1.87. 1.1. 1.3. 1.38. 0.38. You remember? It's basically 4/3. Yeah, 4/3. No, yeah, correct. 1.38. तो अगर मैं ये के ई था, है ना? हाँ, ये टोटल के ही है ना? ये टोटल के ही है ना? दिस टोटल के ही इज 3/2 nRT, right? 3/2 nRT. What is number of moles? Mass by molar mass. Given mass by molar mass. ये होता है. और क्या होता है? And capital N by NA. कैपिटल एन बाय एन भी होता है ना. हाँ हाँ, यस. क्या होता है? Capital N by NA. नंबर ऑफ मोल्स इज नंबर ऑफ मोल्स. Number of molecules divided by R. हाँ, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो, ये भी तो होता है ना? तो इसको लिखेंगे E इज इक्वल टू 3/2 कैपिटल N बाय NA और RT. समझ में आ गया? हेलो, यस और नो? अच्छा, ये E क्या है? फिर से बोलो. Kinetic energy. ऑफ Molecules. किसका? System. सिस्टम. All of them. अगर मैं इसको ये n को नीचे लेके आऊं तो ये E by N क्या है? Energy or एनर्जी पर मॉलिक्यूल. दिस एनर्जी पर मॉलिक्यूल the same. You know this. इज इक्वल टू 3/2 एंड व्हाट इज R by NA? R by NA is KB. KBT. ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन. यू हैव टू रिमेंबर दिस. एनर्जी ऑफ ईच, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज 3/2 KB. 3/2 KBT. ठीक है. ओके, How can we minus it? What is बंद रखो. ठीक है. The third is minus 20. Yeah. ठीक है. एंड ये भी याद रखना कि E जो होता है ये इसके बराबर भी होता है हाफ m into VRMS स्क्वायर. ओके, इट इज, ये था ही ना काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच, सॉरी ये वाला, ये नहीं, ये था हाफ m VRMS स्क्वायर. ये था ना काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल. Yes. ठीक है. सो यहाँ से आता है VRMS इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी, जिसपे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं. क्या आता है? VRMS इज प्रोपोर्शनल टू रूट टेम्परेचर. ओके, सो इफ यू मेक द टेम्परेचर 4 times the RMS speed, if you make the temperature 4 times the RMS speed, Oh, it's increased by 2 times. increase by 2 times. ठीक है.
If you increase the RMS by 5 times, that means you have increased temperature by गधा सुनता नहीं है। Yeah. If you increase the RMS by 5 times, that means the temperature was increased by 25 times. Oh yeah, it's square. Okay. So the same question now. Yeah. Yes, sorry. ठीक है, fine. ठीक है, understood till here? Okay, now इसमें कुछ तो ये सब बेकार है, ये सब नहीं आएगा क्योंकि पार्टीशन ऑफ एनर्जी। इसमें ये देखो, ये लिख लो कि द एनर्जीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इक्वल इन एवरी डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि एक्स डायरेक्शन में कितना है, उतना ही जितना वाई में, जितना ही जेड में है। ठीक है, नो इट इज नॉट, या इट इज हाफ केबीटी, वेरी गुड। सो इन जनरल एक्स डायरेक्शन में इट इज हाफ केबीटी, इन वाई डायरेक्शन हाफ केबीटी, इन जेड डायरेक्शन हाफ केबीटी, एंड टोटल इज 3/2 केबीटी। ओके फाइन। अच्छा, अब देखो तुमको बताया था कि U क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहा था, तो U क्या होता है। एक एक मॉलिक्यूल कभी पढ़ा, एनर्जी कितना है, 3/2 केबीटी है ना। और ये पता है कि टोटल अगर इसको केबी को अगर n से मल्टीप्लाई कर दिया एवोगैड्रो से, तो R आ जाएगा। तो अगर 1 मोल होगा तो उसका कितना होगा एनर्जी, ये तो 1 मॉलिक्यूल का है, 1 मोल का कितना होगा 3/2 RT, क्योंकि मल्टीप्लाई केबी बाय R एंड यू गेट केबी बाय Na एंड यू गेट R। ठीक, 1 मोल का, ये 1 मोल का एनर्जी है, दिस इज, तो ये कौन सी एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है ना। तो U इज दिस, जो Q इज इक्वल टू U प्लस W में जो U था वो ये है। ठीक है, 1 मोल के लिए। अच्छा, मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है, C क्या होता है, du by dt। ठीक है, du by dt, तो कितना होगा ये, What is C? Like what is CV specific? Oh, कितना होगा 3/2 T R. समझ में आया, डिफरेंशिएट Specific. हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, 3/2 R, और एक फॉर्मूला था Cp इज इक्वल टू CV प्लस R, ये था ना। तो Cp कितना हो जाएगा Well, 5/2 R। ठीक, और एक गामा कितना होता है, Cp बाई CV, तो गामा कितना हो जाएगा 5/3। ये सब किसके लिए ट्रू है, फॉर मोनो एटॉमिक, क्योंकि मोनोटॉमिक के ना, मोनोटॉमिक एक जो एक इसका भी रीजन है, मैंने क्यों बोला मोनोटॉमिक का 3/2 केबीटी है। For 1 mole. नहीं, फॉर नहीं, फॉर वो इस- सुनो, फॉर डायोटॉमिक ना ये चीज 5/2 केबीटी हो जाएगी। देखो ऐसा है, मैंने बताया कि हर एक एक्सिस में एक डायरेक्शन होता है। तो लॉजिक ये होता है कि जो मोनोएटॉमिक गैस होती है, अगर एक बॉल है तुम्हारे पास, खाली एक बॉल, वो उसके में क्या क्या उसमें क्या क्या एनर्जी हो सकती है। एक तो उसकी एनर्जी हो सकती है कि उसमें ना सिर्फ ट्रांसलेशन एनर्जी हो सकती है। कैसे एनर्जी, ट्रांसलेशन मतलब वो तो ऐसे जाएगी, मतलब वेलोसिटी होगी उसकी, तो वेलोसिटी होगी तो कितने कंपोनेंट में टूटेगी, 3 कंपोनेंट में, इसलिए यहाँ पे 3 है ये। ठीक है, अगर कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है ऐसा डायटोमिक, ठीक है, तो उसका जो एनर्जी है उसका 3 तो उसकी आती है ट्रांसलेशन से, Vx Vy Vz, 3 यहाँ हो गई। ठीक है, प्लस 2 आती है रोटेशन से। ठीक, और जो रोटेशन होता है वो एक इस एक्सिस के अबाउट होता है और एक इसके परपेंडिकुलर एक्सिस के बराबर होता है। जो इस एक्सिस के रोटेशन होता है उसका एनर्जी 0 होता है। it has something to do with moment of inertia. The moment of inertia of so it has something to do with this. If you rotate this rod about this axis, it will have a significant moment of inertia. Okay, if you rotate this rod about this axis, it will have significant moment of inertia. See, इस एक्सिस से x एक है, एक y है और एक z है। एक x है, एक y है और एक z है। x के ऊपर घुमाओगे, एक ऐसे घूम रहा है, एक में ऐसे घूम रहा है ना। ठीक, एक में ऐसे घूम रहा है और एक में ऐसे घूम रहा है।
किस रोटेशन में the distribution of mass from the center of axis is least, is very less, this The x-axis. ये वाला ना, तो इसके अबाउट इसका आई बहुत कम होता है। क्या होता है? आई कम होता है, ठीक है। आई इज एम आर स्क्वायर नो, तो एम इज वेरी क्लोज टू द एक्सिस, सो आई इज वेरी लेस। इस केस में आई सिग्निफिकेंट होता है और इस केस, हाँ, और इस केस में भी सिग्निफिकेंट होता है। सो फॉर ऐसे स्पेस्ड आउट, 2 डायमेंशनल ऐसे स्पेस्ड आउट थिंग्स, out of 3 axis, I about 2 axis is significant, I about 1 axis is insignificant। तो वहां से 2 एनर्जीज आती हैं, रोटेशन की 2 एनर्जी और ट्रांसलेशन की 3 एनर्जी। तो डायटोमिक के लिए कितना टोटल एनर्जी आती है? 5। तो डायटोमिक में कितना आता है? U 5/2 kVt। जब 5/2 kV आएगा या और RT आएगा तो CV कितना हो जाएगा? 5/2R। समझ में आया? CP कितना हो जाएगा? 7/2R। गामा कितना हो जाएगा? 7/5। समझ में आया? इतना वैल्यूज याद रखनी है। तो इस सब का रीजन क्या है कि मोनोटॉमिक में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज 3, इसको बोलते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3, और डायटोमिक में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5। ठीक है। Wait, one is this, then y, I mean x, y, z, and then your rotation. हाँ, रोटेशन। एक तो 3 जो उसमें 5 में से Yeah, it is diatomic, it's something. 3 जो है वो लीनियर के हैं, हाँ, लीनियर के 3 है, yeah. एक्स वाई जेड, और प्लस रोटेशन के 2 होते हैं, दोनों किसमें, विच इज अबाउट, तुम डिपेंड करता है कैसे तुम ले रहे हो। ठीक है। Okay. मोनोटॉमिक है तो ओनली ये वाला रहता है, रोटेशन ऑलमोस्ट 0 है। डायटोमिक है तो ये 5 रहते हैं। In rotation there are 3, but one of them is like not. हाँ, रोटेशन में एक तो अबाउट दिस, ये 2 मॉलिक्यूल्स अगर ऐसे हैं H2H2, ये वाला रोटेशन इज इनसिग्निफिकेंट, right? But this rotation and this rotation is significant. Okay. And sir, what is how do you get CP is equal to? CP is equal to CP plus R. How do you get that? Oh, that is Q is equal to U plus W. No, get CP and CP delta T is equal to delta U and CP delta T plus NR delta T. Delta T delta T goes. ठीक है। For बस Yeah. हम जाके दोबारा लेक्चर देख लेना। YCP is equal to CP plus R। ठीक है। ठीक है। अच्छा, लिखो फॉर सॉलिड्स C is always 3R विदाउट रीजन बता रहा हूं मैं। ठीक है, अभी याद रखो। फॉर सॉलिड्स C is always 3R। CV or CP. कोई CB नहीं है उसमें, सॉलिड एक्सपैंड थोड़ा होता है। ठीक है। Or what is specific heat for constant? So what does it mean? Like how much heat? U is equal to NCV. अभी छोड़ो। ठीक है। I is equal to NCV. हाँ, और ये लिख लो, ये सॉलिड के लिए है, और वाटर के लिए लिखो C is equal to 9R। ठीक है। as the molecule becomes more complicated, ठीक है, there are more specific, there are more degrees of freedom। ओके। अच्छा, ये समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज को और मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ, तुमको डायरेक्टली फॉर्मूला दे रहा हूँ। उसका एग्जाम में क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आएगा कि रिलेशन टाइम्स आएगा कि ये बढ़ता है तो ये बताओ इसमें क्या होता है। देखो सुनो, एक मीन फ्री पाथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स is equal to L is equal to 1 by √2 n pi d square, where n is the number density. L is the mean. Yeah, number density and d is diameter of molecule. This monatomic, diatomic है और कुछ नहीं आता एग्जाम में, और कुछ नहीं आएगा। ठीक है। L is 1 by √2 n pi d square। ठीक है। This is mean free path। Done? Yeah. wait.
All time. All time. I want to see everything. But this screen. How do you wrote the main report? So this देखें अब देखें अब वो assignment खोलो जल्दी it is on the website also okay Same root is ready for you. क्या root is only for 2 ठीक है assignment खोलो करना चालू करो 42 से नहीं करना तो पहले वाला भी है तुमने क्वेश्चन नंबर 21 22 23 किए हैं ठीक है ठीक है ठीक है 39 से करना है And what will be added or only to 41? नहीं मैं ऐड कर रहा हूँ 45 तक तो मैंने डाल ही दिया है ठीक है एंड वटसन एंड श्रेया एंड सुजॉय एंड आर्या